A very important article. We have discussed about the Great Indian Bustard and the Supreme Court judgment. We had certain commitments. हम लोग fossil fuel से नहीं बनाएंगे अपना energy resources. We will depend upon renewable sources of energy or non-fossil fuels. We'll produce electricity or we'll produce energy through the renewable sources. सोनम वांगचुक का climate pass सुना आपने? It has so many reasons behind it. ठीक है ना, वो ऐसे ही जाके वहाँ नहीं बैठ गए हैं. A half-hearted climate change verdict. A very important article. We have discussed about the Great Indian Bustard and the Supreme Court judgment about that. Okay? So what is the issue? So in the Paris Climate Agreement, COP21, we had certain commitments. What were the commitments? That we will produce 500 gigawatt of energy. Okay? Then we have committed that 50% of our energy resources will be 50% of energy resources will come from, renewable sources of energy by 2030, or you can say non-fossil fuel. हम लोग fossil fuel से नहीं बनाएंगे अपना energy resources. We will depend upon renewable sources of energy or non-fossil fuels, right? Now we have also committed that we will become net zero carbon emission by 2070. ठीक है ना? So we have done certain commitments, in the background of climate change. So we have also committed certain things that we will do these things to reduce the impact of climate change and to reduce the global warming. ठीक है कि हम renewable sources of energy पे जाएंगे. We'll produce electricity or we'll produce energy through the renewable sources. And which are those renewable sources that can be renewed? है ना? Which are those? Hydroelectricity, then solar energy, wind energy. So these are considered as renewable sources of energy. Now we will generate electricity from these renewable sources of energy, and by 2030, 50% of energy generation will come from these sources. है ना? 50% आपका आएगा इन sources से. It means that you need to have that much amount of investment. है ना? Ground level पे investment चाहिए. So now what is the problem? So while committing these things, what we are doing while implementing these projects to the ground level, we are basically compromising on lot many things, on lot many aspects. ठीक है? पहली चीज क्या? If we have to invest in hydroelectricity power generation or solar, यहाँ पे लिखते जाओ hydroelectricity, sun or the solar rooftop, you can write sun, wind. So all these types of investment requires what? It requires लैंड में ही आप करवाओगे इन चीजों को. स्पेशली आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे. वेयर डू वी डू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? वेयर डू वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फ्रॉम वेयर वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली इन द हिमालयन एरियाज. वहां पे डैम्स बनाते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है? सो व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन, व्हाट इज द एम? हमारा एम क्या है? व्हाट इज आवर एम? हमारा एम है दैट वी हैव टू fulfill our commitments of the climate goals, right? But at the same time, what we are doing it at the cost of something else, something very devastating. ठीक है ना? गवर्नमेंट को ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं? अब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करोगे, डैम बनाओगे, what will happen? A community displacement, right? Displacement of community will occur. ठीक है? It means you are not taking the right of the community. Now, what other things will happen? Deforestation will occur. है ना? To fulfill one thing,
you have to do some other thing. So deforestation भी हो जाता है कई बार. अल्टीमेटली गोल क्या है आपका? क्लाइमेट चेंज को फुलफिल करना है. बट उसी को फुलफिल करने में आपने जो रास्ते अपनाए हैं, दोज पाथ्स आर नॉट एप्रोप्रिएट और करेक्ट. सो डिफॉरेस्टेशन विल आल्सो बी देयर. Disturbances of flora and fauna at a huge number, in a huge number. The one example that we have taken, that great Indian bustard example, that we are doing, implanting lot many solar panels at the cost of what? At the cost of the life of great Indian bustard. Because उन areas में great Indian bustard रहती हैं. And that is the areas of sunlight also. That the potential for sunlight will be available in those areas, Gujarat, Rajasthan. And it is also impacting your biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी को भी आप ने कहीं का नहीं छोड़ा. ठीक है ना? So it creates huge displacement, it creates biodiversity losses, it creates deforestation and many more things. So this is a half-hearted climate change verdict. आपने पूरे दिल से नहीं किया है. Climate change में, if you are talking about climate, all these things will also be a part of your climate, right? You cannot ignore these things because, and what is happening in the name of renewable sources project, ये जो आपके renewable sources project होते हैं, renewable projects. So these are the renewable projects, sunroofs, windmills, right? So you also ignore environmental impact assessment. जो EIA है, what is EIA? Environment Impact Assessment. So if you have to install any particular, company or a building or for any purpose, right? So it has to go through environment impact assessment. If you're setting an industry in a particular location, what impact it will create to the society, to the forest, to the people, to the biodiversity. So that you assess before establishing a particular industry. ठीक है ना? तो अब आप क्या बोलते हो? इसको कैसे आप कर सकते हैं? Cross by taking the name of renewable project. You are not going through this EIA, which is a mandatory thing. But इसको waive off किया गया है. In the case of renewable sources of energy, it has been waived off. It means that if you are setting a particular industry for hydroelectricity generation or for wind power or for solar power, it will not go through this environmental impact assessment, which is otherwise important or mandatory in other types of industries. उन इंडस्ट्रीज में आप पूरा इम्पैक्ट असेस करते हो कि क्या क्रिएट करेगा, पर इन इंडस्ट्रीज को बनाने में आप EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेस नहीं करते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द एनवायरमेंट, वी आर डूइंग इट फॉर द क्लाइमेट, हेंस देयर इज नो नीड ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, बट इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट. ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है. ठीक है ना? तो ये हमारी जो कोशिश है वो एक हाफ हार्टेड है, ये फुल हार्टेड हमने नहीं किया है. ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट, earthquake, yes, very true. Yes, this point I was missing. So if you are building any particular hydroelectricity project in the fragile area or the vulnerable area, especially in the Himalayan area, it is also creating impact there. It is creating disturbance in the ecology of that particular location. ठीक है ना? आप ड्रिल कर रहे हो, पूरे मशीन्स ला रहे हो, frequently you are seeing earthquakes, frequently you are seeing landslides. ठीक है ना? एक तरह से क्या है, आपने डिजास्टर को भी क्या किया है? वेलकम किया है. यू आर वेलकमिंग दोज टाइप्स ऑफ डिजास्टर बाय इंस्टॉलिंग सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इन द वल्नरेबल एरियाज, इन द फ्रेजाइल एरियाज. ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट है दैट यू कैन इंक्लूड. ठीक है ना? हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, क्रिएशन ऑफ डैम ऑल्सो इफेक्ट्स प्लेट टेक्टोनिक मैम. एग्जाम्पल जोशीमठ. ठीक है? प्लेट टेक्टोनिक को बहुत मेजर लेवल पे नहीं करता है इफेक्ट, बट येस इट डज क्रिएट प्रेशर. सो प्रेशर समटाइम्स क्या होता है, द प्लेट मूवमेंट्स बेसिकली, नॉट प्लेट टेक्टोनिक, बट येस इट डज इम्पैक्ट द प्लेट मूवमेंट बिकॉज फोल्डिंग होगी, फॉल्टिंग होगी, द क्रैक इज ऑल्सो गेटिंग डेवलप्ड. इट मीन्स दैट इट विल क्रिएट सम अमाउंट ऑफ, इट विल एमिट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना? जो क्रैक आपने प्रेशर दिया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली क्रैक आएगा. And the crack is there, it means it will emit certain amount of energy because that crack is at huge level, बहुत huge level पे हो रहा है, and ultimately it will create earthquake, earthquake से landslide, landslide से GLOF. You can relate one disaster triggering other type of disaster, है ना? जैसे कैसे
Suppose you are making hydroelectricity dam here. It is creating a pressure in the crust. Then it is creating a crack. Energy is released in all the direction. Seismic waves, basically. It is an earthquake. Now, because it is a fragile area, you are in the mountainous region. It will also create your landslide. Okay? Now, with the landslide, it might happen because just now that day we saw there are too many glacial lakes in the Indus region, in the Brahmaputra region, in the Ganga region. That can also lead to breaking of those lakes. So you can have GLOF, that is glacial lake outburst flood. So it will create a flood-like situation. And all these types of disaster will impact what? It will impact society. ठीक है? आप social लिख सकते हैं, economy, environment, और इसमें डाल देना infrastructure, right? So these will be the common impact of all these types of disaster. ठीक है? Yes, domino effect. ठीक है ना? Always try to link. हमेशा लिंक करके पढ़ो आप लोग. Already it will, you will have that map in your mind. So create that map in your mind. Yeah. Yes. The high. सिलियारा डिजास्टर ही है. अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इन हिमालयन रीजन में विदाउट हैविंग अ प्रॉपर परमिशन आल्सो. सोनम वांगचुक का क्लाइमेट पास सुना आपने? सो इट हैज सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट. ठीक है ना? वो ऐसे ही जाके वहां नहीं बैठ गए हैं. इज अ वेरी रिनोन्ड पर्सन. उनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं. ठीक है ना? सो ही हैज एनालाइज्ड दैट इकोसिस्टम प्रॉपर्ली एंड देन आल्सो ही इज सेइंग सर्टेन थिंग्स. तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज घुस रहे हैं. tourism has impacted a lot in these areas. It has created a huge pressure. जितना आपका capacity नहीं थी, you are welcoming so many tourists. So आपको tourism की भी capacity fix करनी चाहिए, so that it should not overburden a particular location. It should not pressurize a particular location. Tourist आते हैं, फिर plastic pollution करते हैं. More tourism मतलब more hotels. More hotels means more need of water resources and other types of resources. Again, it is a cycle, na? From one side demand is coming, you are fulfilling that demand, and again it is creating havoc like situation. So it's a circle that we are following. ठीक है ना? तो जोशीमठ, yes, still बहुत सारे landslides हो रहे हैं वहाँ पे. इतने पहले नहीं थे, पहले भी थे, but now because of so many infrastructure development in these areas, these types of disasters have become very frequent. Okay. Yes, domino effect. Clear है? अभी तक सब कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट, एवरीथिंग इज क्लियर बाय नाउ? ठीक है, बहुत सारा है, लेट्स डिस्कस. ये इसमें यही था. एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीवियसली. क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे. Describe briefly India's changing policy towards climate change in the various international fora in the context of geopolitics. Does the right to clean environment entail legal regulation on burning crackers during Diwali? Discuss in the light of Article 21 of the Indian Constitution and the judgment of the apex in this regard. So, right to healthy environment is again a part of right to life. Article 21 का ये part है. ठीक है ना? अभी आप देखोगे कि कुछ जजमेंट्स में, जैसे यमुना नदी है, गंगा नदी है, इट हैज बीन प्रोवाइडेड राइट्स. इनको लीगल एंटिटी कंसिडर किया गया है. गंगा को भी इन उत्तराखंड इट हैज बीन कंसिडर्ड एज अ लीगल राइट. ठीक है ना? सो इट हैज बीन गिवन अ लीगल एंटिटी. इट मीन्स दैट रिवर हैज बीन कंसिडर्ड एज अ लीगल एंटिटी. सो इफ नाउ सम पॉल्यूशन विल बी occurring in that particular site, so what will happen? Any person has a right to take that case into the Supreme Court or the High Court. वो उस केस को ले जा सकते हैं क्योंकि उसको एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया रिवर को भी. ठीक है ना? So it's very important now that we understand or recognize the rights of our nature, which include right of a trees, which includes right of a river, right of a land, rights of a forest. है ना? हमारे rights है तो उनकी भी rights हैं. They also have the right. है ना? They also have the right to live properly. Okay?